Field digital elevation model or elevation raster is void of depressions. Depression is a cell or cells in an elevation raster that are surrounded by higher elevation values and thus represent an area of internal drainage. Although some depressions are real, such as quarries or glaciated bathholes, many are imperfections in the digital elevation model. Therefore, depressions must be removed from an elevation raster. A common method for removing a depression is to increase its cell value to the lowest overflow point out of the sink. And these studies have been given by Janssen in 1988. The flat surface resulting from sink filling still needs to be interpreted to delineate the drainage flow. So what is meant by drainage flow and what is meant by depression? Depression is a hole or surface, and it is not a plateau, it is a basin. Depression is a basin basically. And one thing more, I am telling you the elevation. What is meant by elevation? Elevation is an height. It's a word height, gradient. These are same terminologies uses for typical height. All right. So मैं किधर थी? So one approach to impose too shallow gradients and to force flow away from higher terrain surrounding the flat surfaces toward the edge bordering lower terrain. And these studies have been shown by March 2000. And this is very current studies, and after 20 I think there have been so many studies. A few people know up till now who is the scientist who discovered or who invented different elevation models. Then do send me comment back, do send me their references, proper references in my comment section, so that I will give proper knowledge. I will gain through your comments. एंड और इसके बारे में क्या, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ. इट मीन्स ये एलिवेशन मॉडल्स जो होते हैं ना, जो डिप्रेशन होते हैं, वॉइड ऑफ डिप्रेशन होती हैं, उनको लेकर ये डिलीनिएशन की हुई हैं. इनके बारे में उन डिप्रेशंस के बारे में ये चीज़ डील करता है. लेट्स सपोज आपके एरिया में जहाँ जहाँ डिप्रेशंस हैं, जहाँ जहाँ वाइड स्पेसेस हैं, वहाँ पर हम DEM या डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स को प्रिपेयर इजीली कर सकते हैं. और ये टोटल मैनुअली भी इसको कर सकते हैं. और बट ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड हो तो ज़्यादा इसमें मज़ा आता है. इनको करने को एक बंदे को ज़्यादा इसके बारे में नो हाउ हो जाती है. अच्छा, एक वर्ड है वाटर बाउंड्री डाटाबेस, वाटरशेड बाउंड्री डाटाबेस. अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो मुझे बताएं, अदरवाइज़ मैं फिर खुद इसके बारे में एक वीडियो दूँगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.